Yes, hello AISL students. So in our FA we have only 3 units and one of them is financial maths, other one is simultaneous equations and third one is exponents. So financial maths mein what things you need to remember? First thing you need to remember in financial maths is whether you are solving annuity ka question or whether you are solving amortization ka question or whether you are solving any other question except these two. Getting it? सो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में है. सो एन्युटी मीन्स व्हाट? एन्युटी मीन्स तुम्हारे पास में लमसम बहुत सारा पैसा है, यू हैव लॉट्स ऑफ मनी इन लमसम, यू आर पुटिंग इट समवेयर एज अ इन्वेस्टमेंट एंड यू आर अर्निंग मंथली और ईयरली इनकम बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, दैट इज एन्युटी. What is amortization? You have taken the loan and over the period of years you have to repay that loan. Okay, in both cases future value is always zero. ठीक है, and in both cases there will be the involvement of term called as PMT. PMT means payment. ठीक है, so when I'm talking about payment there are 3 types I mentioned. One is annuity, one is amortization and one is one other like except these two. ठीक है, so in PMT what you do, you go to calculate menu 8, you get finances. ठीक है, you have to go to finance solver and here if question mentions PMT you need to remember few things. If money is getting out of your pocket you take it negative, so you have to write minus 6,000 or let's say whatever the value is given you have to write that answer in negative term. ठीक है, if money is coming to you you write that answer positive. It means whatever amount is coming to you you will take it as positive, whatever amount is going out of your pocket you will take it negative. ठीक है, okay. Now PMT means what? PMT means payments which you are making apart from taking lump sum or investing lump sum amount. ठीक है, so PMT can be monthly, quarterly, annually, semi-annually, thrice a year. Question will mention that. ठीक है, if question does not mention PMT, अगर question ने PMT mention नहीं किया है तो we will take it as 0. Okay, and once PMT is 0 our PPY and CPY का values will always be same. If PMT in question is 0 PPY and CPY will be same. This is our third, none of the annuity or amortization वाला questions. Getting it? अगर PMT mention किया है तो ये दोनों values different हो सकते हैं, लेकिन अगर PMT mention नहीं किया है तो ये दोनों values same रहेंगे. Getting it? Okay, this is first area of mistake. Second one is फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए. अगर पैसा जा रहा है इनिशियली तो प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव रहेगा, पैसा आ रहा है इनिशियली तो प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, तो उसके हिसाब से तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए. गेटिंग इट? सेकेंड पोटेंशियल एरिया ऑफ मिस्टेक इज एन. दिस एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ ईयर्स इनटू पीपीवाई वैल्यू. ओके, N is nothing but number of payments you are making. So N is nothing but number of years and PPY is nothing but payments you are making per year. So if you are making 3 payments per year for next 15 years, so 15 3s are 45. So 45 is what you have to put down here. Getting it or not? Same way, when question asks you to find the value of years, when question asks you to find value in years, whatever answer you get here, that is not years. That is only N into PPY. Let's say your PPY का value is 2, then your number of years will be 20 upon 2, so N is equals to 10. So total number of years will be 10. So this is second area of mistake. ठीक है, this you have to keep in mind कि ये 3-4 जो मैंने points बताए यहाँ पे mistake हो सकता है. Getting it or not? You need to keep this in mind. Second point इसमें important ये याद रखना है बस. If question gives that you are taking a loan of 10 lakhs but it requires deposit of 20%. ठीक है, deposit 20% means what? You have to subtract 20% of 10 lakhs from the given amount, so you will be left with 8 lakhs only. Why we are doing this calculation? We are doing this calculation to keep in mind कि हमारा present value affect होने वाला है. 10 lakhs तो मैं लोन ले रहा हूं but जो लोन दे रहा है वो ऑलरेडी 2 लाख रुपए डिपॉजिट मांग रहा है, तो बचेगा मेरे हाथ में सिर्फ 8 लाख. सो माय प्रेजेंट वैल्यू विल बी 8 लाख. आई एम टेकिंग द लोन, आई विल टेक इट पॉजिटिव 8 lakhs. गेटिंग इट और नॉट? ठीक है, these are the potential these are the important points you need to remember. Okay, once done with all these points, whatever the value you have to find, you just go to that column or you just go to that row or that table and you press enter there. जैसे PMT में जाना था,
PMT में जाके इंटर कर दिया, आई विल गेट माई आंसर. ठीक है, दिस इज वॉट यू हैव टू डू इन फाइनेंशियल मैथ्स. You just need to identify these values: present value, payment, future value. Payment in 1 year, how many times you are doing? CPY, how many times a year you are getting interest from your whatever investment you are making. Getting it or not? So this is for financial maths, you need to remember. Second one is simultaneous equation. Simultaneous equation is very simple question. Okay, it is very simple question. You just need to remember, read entire question. क्वेश्चन इसके बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चंस है इसके. यू फर्स्ट रीड इंटायर क्वेश्चन, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुमको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, दे विल गिव यू सम सर्टन फंक्शन, लेट्स से फिर दे देंगे ax² + bx + c, ऐसा इक्वेशन दे देंगे. देन दे विल टेल यू व्हेन x was 1 f of x was 10, when x was 2 f of x was let's say 20, when x was 3 then f of x was let's say 45. ठीक है, they'll give you this kind of values, and based on this data you need to find 3 simultaneous equation. How do you find 3 simultaneous equation based on these 3 datas? You take x ka value 1 and you put it in equation. So what you get, a bracket 1 square plus b into 1 plus c, that is equals to 10. And you don't even need to solve it entirely. I'll tell you how you solve it. ठीक है, you take x equals to 2, then you will put x bracket 2 square plus b bracket 2 plus c equals to 20. Then you take x equals to 3, you will put 3 square plus b times 3 plus c equals to 45. This is how you get 3 equations. Okay, now suppose instead of giving quadratic they gives you cubic, so यहाँ पे ऐसे 4 equations बनेंगे. Getting it? With 3 points you will get 4 equations, like 4 terms, 1 2 3 4 equals to whatever the value is given, but logic is still same. थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस. Once you get these 3 equations, what you do, you go to calculator, you go to calculate, then you go to menu, then you press 3 because you need to go to algebra, then you go to solve system of linear equations, and we have linear equations in 3 variables. So here I will put 3. If I put 3 and press tab, it will directly give me 3 variables, and then I press OK, it directly gives me the equation. ठीक है, यहां पे तुमको बस एक चीज ध्यान में रखनी है, the entire equation is in xyz form. So whatever equations you have formed here, you have to put them as xyz. So what I have to do, इसको मैं x लिखूंगा, x लिखूंगा, x लिखूंगा, इसको y लिखूंगा, y लिखूंगा, y लिखूंगा, इसको z लिखूंगा, z लिखूंगा, z लिखूंगा. ठीक है, once I write this, I'll put this in my calculator. So first equation what I'm getting is x plus y plus z is equals to 10. Second equation what I'm getting, x into 2 square plus y into 2 plus z equals to 20. ठीक है, third equation what I'm getting, x into 3 square plus y into 3 plus z, 2 बार हो गया, z equals to 45, and then enter. You directly get the answer. You don't even have to solve for those equations. ठीक है, if you directly want the answer. If question is specifically asking you to write down 3 equations, तुमको बस एक काम करना है, तुमको 3 square 9 होता है, 9x लिख दिया, 3 into y 3y होता है, 3 लिख दिया, z होता है, तो ये 45 हो गया. ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन. इसको सिंप्लीफाई करना है, 4x plus 2 into y 2y plus z equals to 20 हो गया. So this is how you can write equations as well. ठीक है, now someone will say कि सर मुझे fractions में आंसर नहीं चाहिए, मुझे decimal में चाहिए. You just press control and then you just press enter. All your answers will be converted into decimals. Getting it or not? This is how you solve simultaneous follow questions. Now third part is exponents. Exponents के लिए you just need to remember the basic formulas. A raised to power m into a raised to power n equals to a raised to power m plus n. A raised to power m divided by a raised to power n will be a raised to power m minus n. पावर का पावर मल्टीप्लाई करेगा. अगर दोनों साइड में बेस सेम है
तो हमारे पावर्स भी इक्वल हो जाएंगे. इफ बेस इज सेम एंड बीच में इक्वल्स टू का साइन, देन पावर्स विल ऑल्सो बी इक्वल. गेटिंग इट और नॉट? सो इसमें तुमको एक टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. लेट्स से दे हैव गिवन 27 रेज टू पावर x plus 3 इक्वल्स टू 1 upon 81 रेज टू पावर 2x. Let's say this kind of question is given and they will ask you solve for x. Solve for x. तो तुमको पूरे के पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि तुम बेस सेम करो. क्या करो? बेस सेम करो और न्यूमरेटर में लेके आओ. किस में लेके आओ? न्यूमरेटर. हाउ डू यू मेक बेस सेम? नाउ आई कैन सी इन दिस क्वेश्चन 27 कैन बी रिटन एज 3 रेज टू पावर 3. सो ये पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू 81 कैन बी रिटन एज 3 रेज टू पावर 4 और ये इसमें 2x आ जाएगा. करेक्ट? बट आई सेड बेस सेम होना चाहिए लेकिन न्यूमरेटर में होना चाहिए. सो ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है इस पे मैं एक्सपोनेंट्स का रूल यूज करूंगा. सो बेस से मैं न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूं तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 8x, बट इट विल बी माइनस बिकॉज एज पर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स लॉज, if I am changing the place of the exponent from numerator to denominator और denominator to numerator, मेरा पावर निगेटिव हो जाता है. ठीक है? सो ये पावर निगेटिव हो गया. नाउ सी माई बेस इज सेम, सो माई पावर्स विल ऑल्सो बी इक्वल यूजिंग दिस लॉ. ठीक है? सो 3x प्लस 9 विल बी इक्वल्स टू माइनस 8x. सो 8x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3x प्लस 8x इक्वल्स टू प्लस 9 इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगा 11x इक्वल्स टू माइनस 9. सो x विल बी इक्वल्स टू माइनस 9 अपॉन 11. ठीक है? सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज जस्ट मेक बेस सेम एंड बेस सेम हैज टू बी इन न्यूमरेटर. दैट्स इट. ऐसे 3 कॉन्सेप्ट्स है, 3 चैप्टर्स है, 3 टॉपिक्स है और उस पर पोटेंशियली ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं. गेटिंग इट? अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेनेवर you are reading question paper, always identify easy, medium, tough questions. Whatever the easy level questions are there, solve them first, then go for the medium one, and then go for the tough ones. Getting it or not? This is enough. If you have not understood, again go back and revise the video, rewind the video, replay it. ठीक है? So that's it for today. All the very best. Bye bye. Take care.